Alright, so we are discussing motion in two-dimensional Gauss plane and motion in 2D. Alright, so critical कोई example यहाँ पर जाते हैं है नहीं इसके motion in 2D. Now, first tell me from question number 1 and 2, we need to match the answers. 1 हम लोग पूरा क्लास में किए थे, right? 2 का आंसर किसका कितना आया? 2 का फर्स्ट आंसर कितना आया? टाइम ऑफ फ्लाइट सबका 2 सेकंड आया, 2 सेकंड आया। स्नेहा क्यों एकदम टाइम नहीं मिला? पूरा एक हफ्ते में ऐसे करने से नहीं चलेगा। बेसिक सम्स तुम लोगों को करना पड़ेगा, ऐसे करने से नहीं चलेगा। 2 सेकंड्स आंसर 2 सेकंड्स अच्छे। जिन लोगों ने नहीं किया है आंसर्स लिख लो, ट्राई करके जो डाउट रहेगा वो मुझसे पूछना। 2 सेकंड फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर है की सेकंड पार्ट है 5 सेंटीमीटर। चल एक्चुअल 5 एक्चुअल 10 बोल से कोणता হবে? फॉर्मूला की लाइक सर, फॉर्मूला की u square sin square theta by u square sin square theta by 2। तो sin theta কত আছে? sin theta sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 তাহলে 1/2 এর স্কয়ার হয়ে গেলে 1/4 হবে। আর এটা ছিল হচ্ছে 20 20 স্কয়ার হচ্ছে 400 আর বাই হচ্ছে 20 বাই 20 কেন? g টা 10 2g আছে না, তাহলে কত আছে? ক্যান্সেল করতে তো 5 আর 6 এর ক্যান্সেল। একবার করে ক্যান্সেলেশনটা। क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्क्वायर पार्ट कोणता? स्क्वायर पार्ट b। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है इसमें? सर मैक्सिमम हाइट का, सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? u square sin square theta by 2g। u square sin square theta by 2g। तो यहां पे डाल देते हैं वैल्यू। u दिया हुआ है हम लोग को 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2g, 2 into 10। So सर 5 ही होंगे 5 calculation mistake, so calculation mistake answer 5 आ गया। अच्छा next बोलता D, the speed of the ball 2 seconds after projection। So how do you find out speed of the ball 2 seconds after projection? For that range what रेंज अच्छे 40 range कितना है? range है formula की, what is the formula for range? sin 2 theta by g, right? पहले u का करो 20 square into sin 2 into 30 degree 60, so 2 into 30 माने 60 degree by g। फिर से तुम बोल रहे हो कि sin 2 into 30 डिग्री है 2 into sin 30 डिग्री, इसका इच्छा हुआ ये एंगल का बाहर आ गया। ऐसे होता है, एंगल का बाहर कभी नहीं आता है कोई चीज, पीटेंगे मगर के। सो 2 into 3 is what? 60। তাহলে sin কত ডিগ্রি by 10। So 0 cancels, 40 sin 60 degrees by 3, so 20√3 is the answer। अच्छा अब तो वैसे ही वाह, तुमको बाहर क्या फिर कोई नहीं, तुमको बाहर निकाल दिए। So part D says ask you to find out the speed of the ball on sin 2 theta का वैल्यू to sin theta। हाँ वैसे करने से क्या आएगा, तो उतना हम लोग परिश्रम क्यों करें। सुनो D का क्वेश्चन क्या है, read the question carefully। It wants you to calculate the speed, okay? Speed after what time? So whenever they are asking you to find out the speed after 2 seconds, remember that speed is the magnitude of velocity। Speed is the magnitude of velocity। So at 2 seconds you need to find out the velocity first, और फिर उसका वैल्यू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। सो v का फॉर्मूला क्या है? any instant कौन सा सर v का फॉर्मूला at any instant v u cos theta I क्या I plus sin theta minus minus g t j
So you have to use this formula. ठीक है? अब u कितना है? 20. थीटा कितना है? 30. So 20 cos 30 degree I cap plus 20 sin 30 degree minus g कितना है? 10 और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड. ठीक है. तो इसका वैल्यू निकालो. cos 30 degree कितना होता है? √3/2. So 10 √3 I cap plus sin 30 degree हाफ होता है. तो हाफ मतलब 10 minus 20 मतलब minus 10 j. Alright? समझ में आया? अब हम लोगों को क्या पूछा है? वेलोसिटी नहीं पूछा है. क्या पूछा है? स्पीड. तो याद रखना कि तुमको स्पीड एट एनी इंस्टेंट पूछेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अब वेलोसिटी क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? जैसा v का मैग्नीट्यूड. तो v का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v का मैग्नीट्यूड मतलब मैंने सिखाया कि i कैप और j कैप में रहने से कैसे मैग्नीट्यूड निकाला जाता है. 10 √3 plus minus 10 whole square makes the same sense. So it will be root over of 300 plus 100. That is root over of 400, which is equal to. Clear? बना लो. जल्दी से बना लो. जिन लोग नहीं बनाया fast. See, this is a very confusing statement. They ask you to find out speed at any instant. That means you need to find out the velocity and then find out the magnitude of the velocity at that instant. But if they ask you to find out average speed, remember that you have to find out the total distance traveled divided by total time taken. So be very careful about the term average. अगर average दिया हुआ है इसका मतलब हम लोगों को total distance traveled by total time निकालना. Is that clear? और अगर तुमको बोलेगा normally just generally speed निकालो. That is nothing but the magnitude of the velocity at that particular instant. इसका भी टेक्निक है. Rudra. So now look at the last part. They want you to find out what the distance of the ball from its point of projection 1 second after it is being thrown. So if they ask you to find out the distance from the point of projection, remember last class we did that if the projectile is at any particular point, then distance from the point of projection is given by the r vector, right? R vector is x I cap plus y j cap. So what is the formula for R vector? Quickly tell me. x I cap plus y. हाँ, तो उसका formula क्या था? u cos theta t I cap u sin theta t plus minus half g square. j cancel. Right. So you just need to put the value of t out here. U कितना था? 20. Cos 30 degree time 1 second velocity equal to 20 sin 30 degree into 1 minus half into 10 into 1 square. Right? Cos 30 degree is how much? 3/2. This will be 10 √3 I cap plus this will be 10 minus 5. That is 5 j cap. So 10 √3 I cap plus 5 j cap. This is the what? The position vector. But this is not the question. The question is only they are only asking you to find out the distance from the point of projection to the position of the particle. So when they are asking you to find out the distance, you cannot write the answer like this. You have to write the magnitude of this. Okay? So the magnitude of displacement is nothing but the distance at any instant. जैसे speed is nothing but the magnitude of velocity, वैसे distance at any instant is nothing but the magnitude of its displacement from the origin, right? So therefore, distance from origin at t equal to 1 second is magnitude of now. That is under root of
10 root 3 whole square plus 5 square. On it, what was it? 300 plus 25. plus 20. So what happens? Well, that's it. So whatever comes out, simplify, that will be the answer. Clear? Acha, question number 3. Question number 3, you will answer. What is the question? What is it saying? Under what condition the formula range, time of flight and maximum height can be applied directly in the case of a projectile motion? Right. So they are saying that you have a projectile motion, in which case can we apply all the formula we have learned. If two bodies are Right. lying In on the case same of now, if the point of projection and the point of return are at the same horizontal level, means it is a only if it is a full projectile. Part projectile जो लिखा है means if you are standing on the top of a building and you are throwing an object which is falling down on the ground, then it is called a part projectile. So part projectile, for part projectile these formula are not applicable. They are applicable only for right. So write this down. Only for full projectile. Only for full projectile. Full projectile. That is when the object returns to the same level, same horizontal level. When the object returns to the same horizontal level from where it has been projected. When the object returns to the same horizontal level from which it has been projected. From which it has been projected. Returns. When the object returns to the same horizontal level from which it has been projected. Okay, so that is called the so only for full projectile. Okay, that is equilibrium use करेंगे. All the formula are applicable. All the formula are applicable. All the formula are applicable. Okay. So question number 4, I won't do it for you. Those who haven't tried again, solve it, and whatever sums answer you have, we'll discuss it because it is exactly the same as 1 and 2. You have to use the formula directly. हाँ? The greatest height reached नहीं है. मतलब greatest height reached is maximum height. हाँ, तो maximum height का formula use करें. हाँ? B में कौन सा नहीं है? D. ओ अच्छा velocity at a height of 9 meter, right? ये D का आंसर ना. तो velocity at a height of 9 meter तुमको पहले निकालना पड़ेगा height of 9 meter 98 meter reach करने के लिए टाइम कितना लगा. पहले वो निकाल के फिर उसको डाल के निकालना. ना अच्छा चलो ये कोड दिखा. Question number 4 quickly. Let's do it. Let's do question number 4. Question number 4 की बोला से? Question number 4 says a particle is projected up from the ground with velocity of how much? 147 meter per second at an angle of projection theta 30 degree with the horizontal. Find out the time of flight. So you know the formula for time of flight? 2u sin theta by. So you can put the value and get your answer, right? Part B, the greatest height reached is the maximum height, that is sin square theta by, right? Sin 2 theta by sin square theta. U square sin square theta by 2. Yes? Calculation आने को तो बेटा क्लास 5 के कुछ हम बता दे. GR value 9.8 दवा अच्छा है करना है given up to you. So 2 into u is 147 into
sin 30 degree by 9.8. So sin 30 degree and 2 will cancel. Sin 30 degree is half. তাহলে 147 by 9.8. এবারে এই ক্যালকুলেশন যদি না করা হয় তাহলে আর আমার কিছু করার নেই। পড়াশোনা করা উচিত না, পড়াশোনা ছেড়ে দাও এবার তাহলে। আচ্ছা, so you put back the value of h and find it out কত হচ্ছে বার করবে। Go for part C. C says the horizontal range. So this is also easy. Range formula for what is u square हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है देखो, d is important. d में बोला है the velocity at a height of 98 meter. Velocity at a height 98 meter. 98 meter है velocity कौन सा? तो सीधा हमने पूरा बात करो। How do you find out the velocity at 98? नहीं, सुनो। ये जो फॉर्मूला है, this is the most common mistake. ये जो फॉर्मूला है, this is the formula for maximum height. और ये जो हाइट है, ये कोई भी पर्टिकुलर हाइट। दूसरा हाइट बाय जो हाइट है वो कर। नहीं, एक नावरम की पर हाइट की जानी चाहिए। ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? तो हम लोग कैसे करते हैं? So you have to go for specific y-axis motion. पहले टाइम निकालेंगे 98। लेकिन कैसे निकालेंगे टाइम? कौन सा एक्सिस में बात करेंगे? सिर्फ y-axis में बात करेंगे बिकॉज़ हम लोग को हाइट दिया हुआ है, राइट? So y-axis में मोशन में वो क्या टाइप ऑफ मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? That is uniformly accelerated motion. So use the formula s equal to ut plus half at square, right? सिर्फ इसका फॉर्मेशन थोड़ा अलग है। हम लोग उसको लिखते हैं y is equal to uyt minus half plus half ay t square. अब बैक बदलते जाओ, y का वैल्यू कितना है? y is अच्छा ये क्वेश्चन में कीजिए सर। velocity at the height of 98। Oh, see, there is no intervention of time. Time में कोई intervention नहीं। Then you can directly find it out. देखो, I'll tell you something. Wait, देखो, you know that velocity at any instant is what? Vx I cap plus means velocity along the x-axis and velocity along the y-axis. Tell me what type of motion is the x-axis motion? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वही फाइनल वेलोसिटी है। vx equal to ux equal to u cos थीटा, राइट? हो गया। और vy हम लोग को निकालना है, ठीक है? तो vy हम लोग y एक्सिस में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? along y एक्सिस अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को जो मतलब रिलेट करना है, जहां पर मुझे टाइम पता नहीं है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v square equal to u square plus twice x, right? So vy square equal to uy square plus twice ay into y. You understand why? माने as तो as डिस्प्लेसमेंट का तो y है। अब वैल्यूज डालो। vy मुझे पता नहीं है, पता है क्या? निकालना है, राइट? So vy square equal to uy कितना दिया हुआ है? 147 u cos theta, right? u cos theta, uy सिर्फ 147 u cos theta plus twice into minus g into h. And h turns to j height, small h, capital H. So what will be the value? Okay, tell me. U what was the answer? 147 cos theta is cos 30 degrees. So 147 into root 3 by 2 whole square minus 2 into right. Yes. Y term displacement तो the displacement is जाएगा height displacement है तो y axis है ना along y axis तो vertical direction है the second displacement is जाएगा height so that's alright. So if you solve this you'll get what? এটা কি বেরোবে? vy square বেরোবে তারপরে ওটা স্কয়ার রুট করলে you get vy and then vx is how much? ux কত? 147 into cos sorry don't do it.
यहाँ पर uy जो साइन होता है ना, really sorry, ये साइन होता है, ये मल्टीप्लाई ना, ये तो सोचेंगे so √3/2. Alright, अब क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 98 मीटर, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड से हम लोग को बोलना है which is √of px² plus बस। ओ इसका कैलकुलेशन मत करो, इसका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। इसका स्क्वायर मतलब 147 into √3/2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का 1 हो जाएगा। समझ में आया? -2 into 9.8 into 98, तो ये हो जाएगा √3/2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर, ऐड करने से वो 1 हो जाएगा और 47 है, सो it will be 147 square minus 2 into 9.8. It will be calculation. क्या हुआ? क्या समझ में नहीं आया? ये कैसे हो गया? अरे यार थोड़ा सोचो, ये क्या है? ये cos थीटा है ना, उसका स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? हाफ sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना, तो दोनों में 147 कॉमन है तो 147 स्क्वायर हो जाएगा। समझना है? So see, you have to look for these calculations. देखो मैंने तुम लोगों को बोला होता है कि इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर वैल्यू डालो, फिर आंसर निकालो, लेकिन मैंने देखा जाने से कि देखो ये sin थीटा ये cos थीटा, इसको स्क्वायर करने से तो sin थीटा प्लस cos थीटा 1 हो जाएगा। So these things has to come with your calculation, with your knowledge. नॉलेज से ये नहीं है कि फॉर्मूला जानो, वैल्यू डालो, कैलकुलेट करके निकाल दो आंसर। नॉलेज ये भी है कि कितना जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर पाए और कितना एफिशिएंटली कर पाए। Do you understand me? Well, next. Time up. ये हो गया है। Next question. Question number 5. Question number 5 क्या है? जल्दी से बताओ। कितना जल्दी question number 5 ट्राई किया? थीटा sin inverse 1/6 ये करते हैं। मैंने जब मैक्सिमम हाइट है तब उनका टाइम का हाफ है। वाह, अच्छा ठीक है, सर मैं एक बार कोड करने की बोल सकती हूँ। Question number 5 says a particle is projected with a speed of 20 meter per second. That means u is equal to 20 meter per second, reaches its greatest height above the point of projection 1/3 of a second later. Means, see, this is the projectile that has been thrown, right? वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल टाइम लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? अब वो इन लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा टाइम नहीं बोल रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा रहा है? 1/3 seconds. So what will be the time of flight? So half. अरे यार बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 1/3 सेकंड लग रहा है, t = 1/3 लग रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां तक पहुँचेगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 2/3 आएगा ना, समझना है? So therefore time of flight is equal to 2 into 1/3, that is 2/3 हाँ, तो ग्रेटेस्ट टाइम कहाँ है बोलो? आधा टाइम पे ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचता है ना, और पूरा टाइम पे वो ग्राउंड पे पहुंचता है। समझना है? Since it is symmetrical motion, so that's why time of flight will be 2/2 into 1/3. So that is 2/3. Is that clear? और now you know the formula for time of flight. तो वहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा? Which
বোঝা গেল অঙ্কটা? তাহলে এখানে you have to find out the theta, find the angle of projection bar. So what is the formula for time of flight? 2u sin theta by g. So you know Q equal to 2u sin theta by g. T क्या है? 32 by 3 second. 2 में हम equal 20 sin 90 degree मुझे मालूम नहीं है. So 0 0 cancels. एक 2 भी का cancel हो जाएगा. So sin theta equal to 1 by 6. So theta equal to sin inverse of 1 by 6. Is that clear? Yes. Well, next three questions. These are actually specific situation and these are theory. Okay. But I have given them as problems so that you solve them and get to understand clearly. Okay. Well, बताना जल्दी से ये हो गया सब लोगों का? हाँ बस इनके वैल्यू उसका वैल्यू तुम कैलकुलेटर में डाल के निकाल सकते हो कितना वैल्यू आएगा। हाँ ये नंबर दे दिया वैल्यू याद ना पड़े लोन वैल्यू ना ये आपको खुद पता है डन फिनिश। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन read the question here. Question number 6. It says two projectiles are projected with same initial velocity u, but the angle of projection are complementary. That is, if the first one is theta, then the second one is 90 degree minus theta. Show that they will have equal range. ठीक है? तो हम लोग निकालते हैं. What is the formula for range? First case, angle of projection is equal to theta. So what is the value of the range? R is equal to u square sin theta by g. u square sin theta by g. And for the second case, angle of projection is equal to 90 degree minus theta, right? Then what is the formula for range? R is equal to U square sin 2 90 degree. right, sin 2 into 90 degree minus theta. Right. So you know, sorry, R dash. इसको R dash लेते हैं, ठीक है? Let's mark this as R dash. इसको R लेते हैं, इसको R dash. So U square sin of 180 degree 2 theta by g. So that is u square. You know, sin of 180 degree minus theta is sin theta. Sin of 180 degree minus theta is sin theta. So this will be sin theta by so दोनों same आ रहा है. This is what we need. Therefore, r dash is equal to r. अब ये जो sum हम लोग किए, जब भी तुम लोग एक सम कर रहे हो ना, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी थोड़ा समझने का कोशिश करो. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग दो अलग-अलग एंगल में फेंकेंगे, एक बॉडी का रेंज सेम होगा, मतलब वो सेम जगह में हिट करेगा. मतलब एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किए, वो यहाँ पर आके हिट किया, एक छोटा सा एंगल, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हिट करेंगे तो वो ऐसे जाके वहीं पर आके समझ में आया. सो व्हाट इज द रिलेशन? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल होगा, पूरा एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी दे विल हैव द सेम. इज दैट क्लियर? हाइट सेम रहेगा, एक का हाइट छोटा रहेगा, एक का हाइट बड़ा रहेगा. तो इस वजह से का अगर की मोटा अगर मोटी क्या नो. Well, now next two questions to be more precise are related to the first question. ठीक है? See question number 7. Question number 7 की बोले से क्या है? Look at this very carefully.
it says that in the previous problem, if the maximum heights reached to be h and h dash, means say this height is h and this height is h dash, right? H dash. ठीक है? ये height h है, ये height h dash है. Then show that h by h dash is equal to tan square theta. So that is very simple. How do you go for it? So you will need to apply the formula, right? So let's go for it quickly. Question number 7. So in the first case, h will be what? U square sine square theta by 2g, right? And h dash will be what? U square sine square 90 degree minus theta by 2g. Why? Because the second angle of projection is 90 degree minus theta, right? So you know sine of 90 degree minus theta is what? Yes. So this will be equal to u square cos square theta by 2g. So let's mark this as equation 1 and this as equation 2. So tell me, first part they are asking you to show is what? H by h dash. What is the value of h by h dash? Right? So if you divide this by this, u square, 2g सब cancel हो जाएगा. Sin square theta by cos square. What is the answer? That is what they are asking for. H by h dash is equal to tan square. Okay? Now see, these situations we are creating, these can be used as formula. ये हम लोग formula के तौर पे use कर सकते हैं. कैसे समझ सकते हैं? If they give you a sum that when a body is projected at two complementary angles, so you know complementary मतलब एक 90 दूसरा 90 degree minus theta. So whenever they say the body is projected at two complementary angles, साथ-साथ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये सिचुएशन कि रेंज दोनों का सेम होगा और हाइट के बीच में रिलेशन है h by h dash equal to tan square. ठीक है? और फिर तुमको बोलेगा कि for the first case the height maximum height reached is 20 meters and the angle of projection is 30 degree. Find out the height in the second case. तो तुमको उतना कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है. You can just directly use this formula and find it. ठीक है? या कोई भी कॉम्पिटिटिव्स में जब एग्जाम होता है उसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो एमसीक्यू तुमको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा टू सॉल्व. सो इवन इफ यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू यू कैन नॉट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग कैलकुलेशंस. तो तुमको याद रखना पड़ेगा ये सिचुएशन में, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ये फॉर्मूला आया था, मतलब यहाँ पर हम लोग सिर्फ वैल्यू डालते हैं फॉर्मूला में और आंसर करते हैं. सो दैट मींस more the number of situations you remember, more quickly you'll be able to complete the question. And is it possible to remember everything just by knowing it once? So you have to keep on revising and solving as much problems as possible. Okay. Once we are done with few chapters, I'll be giving you revision assignments. Revision assignments mean whatever chapters we have done earlier, will be solving numericals on those assignments, specifically those which has come on in the boards or some specific school exams, right? And once you go a little more habituated with the way we are studying in class 11 and 12, I'll keep on giving you assignments with the PYQs. PYQs means past year questions. Means say joint entrance exam or WBJE or medical, all the questions that comes, we have a pool of those questions. So I'll select some questions which you have done, the chapters you have already done, and I'll put them up into revision assignment. Yes, you have to keep on revising the topics all through. क्यों? क्योंकि हम लोग क्लास 11 में जो चीज सीख रहे हैं उसका एप्लीकेशन 12 में जाके, तो अगर 11 का कांसेप्ट हम लोग भूल जाएंगे 11 करते करते 12 में जाके तो वो नहीं चलेगा. समझ में आया? Alright. You have to be very careful and very methodical. 2. Second part का क्वेश्चन क्या है? You have to prove r equal to 4 root over h dash. So see the right hand side is more simplified, right?
RTP क्या है? Required to prove है R equal to 4 root over of H dash. So हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं. ठीक है. So therefore RHS 4 root over of H dash which is equal to 4 under root of H क्या होगा? U square sin square theta by 2 और H dash क्या है? U square cos square theta by 2. तो देखो क्या हो जाएगा? Under root of U square U to the power sin square theta cos square theta कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही रहने दो sin square theta और नीचे 2 to the 4 ये U और नीचे 4 g square है, right? Now I am making a small change. Okay, I am multiplying the numerator and denominator with 4. Now you say why? Why am I doing this? देखो मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है? R का फॉर्मूला सोचो क्या होता है? U square sin 2 theta by g. तो उसमें 2 theta आता है ना, मतलब sin 2 theta लाना पड़ेगा मुझे. तो sin 2 थीटा का फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, राइट? याद है मैं बताया था लोगों को. तो वो 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मेट लाने के लिए मैंने ये किया. अब देखो तो ये स्क्वायर रूट बना के फिर कर सकते थे, दैट इज इजीियर. अगर ठीक है बना लो पहले स्क्वायर रूट बना लो. तो स्क्वायर रूट बना लेंगे तो क्या आएगा? u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा by 2g, राइट? गलत क्या मैंने? अब देखो 2 और कैंसिल हो जाएगा और तुमको मालूम है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? जैसे होता sin थीटा, राइट? sin थीटा. तो आया रेंज का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू वेट पुट करना है ना. ठीक है. सो ये याद रखना है sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos. sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos. ये याद नहीं रखना. और थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है. थर्ड पार्ट में क्या बोला है? पार्ट 3 में तुम लोग ये डायग्राम बना लिए थे ना, ये दो प्रोजेक्टाइल के डायग्राम बनाए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम. कौन टूटा? बोला ऐसे फार्मूला जो टूटा तो लगता है हमारा sin थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा इज sin थीटा. क्लियर? একই ডায়াগ্রাম দুটো হবে. ड्रॉ कर देते तो हाँ बस ये डायग्राम. Well, now the third part is what they are saying. H plus H dash is 9. H is this, H dash is this. So see, everything is common. You get u square sin square theta by 2g plus u square cos square theta by 2g. That is u square taken common, sin square theta plus cos square theta is how much? So it is u square by 2. Okay. H plus H dash is equal to u square by 2. So ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि two objects are shown with same initial velocity at complementary angles. Then find out the sum of their maximum heights. So you need to remember the situation and apply the formula u square by 2g directly. So ये जितना भी expressions हम लोग बना रहे हैं, these are special cases, and you have to remember special cases to be very successful in comparatives. Comparatives से जरा खूब successful है, ताकि के special cases को होना चाहिए. Alright? So I do the onus, or rather I take the onus
of giving you assignments which will keep on recapitulating your previous topics. Okay, and that is primarily and very important. But we'll do that only after I have done Newton's laws of motion. Yes, एक कॉलेज चैप्टर का. अच्छा, এটা হয়ে গেছে? Is this done? Right. Let's go for the next question. Next question দেখি বলেছে তাহলে. Question number 8. Question number 8 says that question number 8 says that in the previous problem if the time of flights are t and t dash मतलब वही सेम सिचुएशन है दोनों अलग-अलग सिचुएशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है? 2u sin theta by g. This is the time of flight in the first case. And t dash का वैल्यू क्या होगा फिर बताओ? 2u sin of 90 degree minus theta. So obviously this will become 2u cos theta by g. तो निकालने क्या बोले हम लोगों को? हाँ, t by t dash. तो ये तो हो गया. Therefore t by t dash is equal to this by this. 2u सब कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? Sin theta by which is equal to 90. Right? Second part का part 2. This is part 1. Part 2 क्या बोले थे? T dash is equal to पता है. T dash माने T dash will be 2u sin theta by g into 2u cos theta by g. Right? So now see the right hand side. You need to prove what? This is equal to 2r by g. So where r is capital R is what? Range. Now let's see format as see sin theta cos theta और after 2 लिए मिले it becomes sin theta. तो यहाँ पर u into u is what? U square. So it will be 2 into u square 2 sin theta cos theta by g. So 2u square sin theta by g. अच्छा g square sorry g into g square. So इसको g into g रखते हैं. क्यों? क्यों g? Because ये g है रेंज का फॉर्मूला, राइट? ये g है रेंज का फॉर्मूला. So we 1 by clear? All right. समझ में आया? Well, go for the next question. Question number 9. Question number 9 हम लोग क्या बताओ? Well, the next question is question number 9. Question number 9 says, for what angle of projection is the range maximum? So, what is the formula for range doing? Range is u square sin. अब question पढ़ो. For what angle of projection? मतलब वो लोग थीटा तुमको निकालने बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? Range is maximum. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम लोग u को चेंज नहीं करेंगे और डिफरेंट एंगल्स में थ्रो करेंगे और देखेंगे कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस दूर जाएगा. So make a guess. कौन सा एंगल के लिए वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस दूर जा सकता है? 90 डिग्री. एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है? अरे यार 90 डिग्री में छोड़ करने से 1 2 ऊपर चला जाएगा. सीधा प्रोजेक्शन 180. अरे 180 क्या? With respect to horizontal throw कर 180 होता क्या पीछे ऐसे? 45. See why?
बिकॉज यहाँ पर और भी चेंज तो नहीं कर रहा है, सो व्हाट इज चेंजिंग ओनली sin to theta. So whenever sin to theta will be maximum, only in that case range will be maximum. Okay, so here u is constant and theta is changing. Therefore, right. This is a very good question she has. See, in physics, in many sums, बहुत सारा कंडीशन तुमको डायरेक्टली बोला नहीं हुआ होता है, तुमको अज्यूम कर लेना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अज्यूम कर दिया कि u कांस्टेंट है और थीटा वेरिएबल है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज देखो क्वेश्चन में तुमको बोल रहा है कि व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा का वैल्यू उन लोग तुमको पूछ रहे हैं, राइट? थीटा का वैल्यू उन लोग तुमको पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कब जब रेंज मैक्सिमम होगा, और कोई वेरिएबल के बारे में कुछ पूछा गया है, कुछ बोला गया है, तो बाकी लोगों को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग को सिचुएशन ही नहीं मिलेगा, समझ में? इसलिए फिजिक्स का ये सिचुएशंस में उनको असम्पशन लेना पड़ेगा कि बाकी लोगों को हम लोग डिस्टर्ब, राइट, उन लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, अलग। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, u is constant and theta is changing, ठीक है? Therefore, range will be maximum when sin theta is maximum, because बाकी तो constant है ना, theta change करने से sin to theta change करेगा, so sin to theta का वैल्यू जब maximum होगा तभी range maximum होगा, right? So therefore tell me what is the maximum value of sin theta? 40 डिग्री। अरे यार छोड़ दो, डिग्री थीटा मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला sin का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 5 डिग्री, राइट? सो वी नो दैट therefore कितना बट डिग्री नहीं पूछा, हम बोल रहे हैं sin ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 90 पे उसका वैल्यू मैक्सिमम है, वो वैल्यू पूछ रहा है 1 और -1 के बीच में रहता है ना, इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो इसीलिए sin to theta यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा, जब sin to theta का वैल्यू 1। अब मुझे बताओ 1 sin का कितना डिग्री का वैल्यू है? 90 डिग्री, सो theta is 90। सिर्फ समझ में आने से नहीं चलेगा, रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। मुझे सम तो समझ में आ गया, मैंने आंसर बता दिया, मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करना नहीं आता है। हाँ राइट, फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये होता है कि समझ में आ रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये होगा समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ अच्छा देखना पड़ेगा, अभी 2 मिनट लगेगा, ठीक है? सो ये थीटा, इज दैट क्लियर? थीटा इज क्लियर? थीटा कितना डिग्री हुआ? 45 डिग्री। तो क्या हम लोग इसमें से क्या सीखे कि जब भी थीटा मैक्सिमम, थीटा 45 डिग्री होगा, रेंज मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना आएगा? r max is equal to, हाँ ये वैल्यू 1 हो जाएगा ना, ये वैल्यू 1, सो आंसर आएगा। तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि कब रेंज मैक्सिमम होता है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45 डिग्री, और वो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना है? u² g, राइट? नेक्स्ट बस सीधा हम लोग थीटा इक्वल 45 डिग्री, कोई भी क्वेश्चन? हाँ रेंज का वैल्यू इतना है, ये फॉर्मूला सीधा है, समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट क्या है? मिनिमम वैल्यू कैसे होगा? रेंज का मिनिमम वैल्यू तभी होता है जब ऐसे ऊपर छोड़ दें, -1 -2 बोला -1 और +1 के बीच में होता है साइन और कॉस दोनों ही, याद रखना, साइन या कॉस दोनों ही। अच्छा नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड रेंज इन दिस सिचुएशन, मतलब ये स्पेसिफिक सिचुएशन
तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा बोलो? अरे यार मालूम है मिडिल में होगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? h इक्वल टू लाताड़ी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 45 degree, because we have found out theta equal to 45 degree, right? So u square sin square 45 degree by একটা ফর্মুলা ঠিকঠাক করে মনে করছে তাহলে কি করে অঙ্ক হবে? u square sin square theta by 2 তাহলে কত হচ্ছে? sin square 45 degree is 1 by root 2 का whole square, so that is half. ताले u square by 2 into 2 4g, ताले u square by g कतो ছিল r max, so I can write this as 1 by 4 r max, right? ताले question में की स्क्वायर relation ताले r max is equal to 4h. That means only in this case, not other cases. ठीक है सर? that r equal to 4h लिखनी है, हम क्या लिखेंगे? r max is equal to 4h. That means एक तो 4 ছিল, अरे u square by g এর ভ্যালুটা কত? तो हम বসিয়ে দিলাম, তাই তো? u square by g এর ভ্যালু r max, তো তাহলে আমি u square by g এর জায়গায় r max বসাবো, বুঝা গেছে? well তারপরে question number 10 টা তোমরা করবে, আমি বলবো না, চটপট do it quickly. Well, now question number 10, it says for what angle of projection is the maximum height equal to range? So h is equal to r. What is the formula for h? U square and what is the formula for range? So obviously we can directly cancel out u square, g cancel कर देंगे, sin square theta by 2 sin square theta by 2 is equal to sin theta. You know sin theta formula is 2 sin theta cos theta, right? तो अगर हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साइड में लेके आ जाएंगे, नंबर दूसरे साइड में डाल देंगे, तो विल गेट sin square theta by sin theta cos theta is equal to 4 sin theta cut, tan theta equal to means theta equal to tan inverse of, right? Okay. Now next question number 11. Question number 11 is a objective question. Tell me what is the answer? Question number 11 is a objective question. tan inverse से मतलब ब्रैकेट का नीचे है, ठीक है? tan inverse एवं लिखो, ठीक है? पूरा ब्रैकेट देना, 4 एक दूसरे के ब्रैकेट में देना, क्या tan inverse of 4. 11 का आंसर का रुद्र देगा मुझे, 11 का आंसर क्या होगा रुद्र? जल्दी से बताओ, 11 का आंसर क्या होगा? A projectile at an angle of 30 degree from the horizontal has a range r. If the angle of projection at the same initial velocity is 60 degree, then find the range. अरे यार r ही तो होगा, अभी क्या पढ़े तुम? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किए? क्या बताया था 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताया था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ऐड करने से अगर 90 डिग्री आएगा, तो फर्स्ट वाला रेंज जितना है सेकंड वाला रेंज भी, राइट? सो यहाँ पर देखो 30 डिग्री फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, सो द रेंज विल बी सेम. राइट दिस डाउन. Since the angle of projections are complementary,
since the angle of projections are complementary, hence the range will be same. Alright? Next question, question number 12. Read the question carefully and then I'll discuss quickly. Okay, अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताना चाहता है हम लोग। ठीक है, 12 तो हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले। A particle P is projected from a point O with an initial velocity of 60 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. तो जनरली हम लोग इसको ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, ये हॉरिजॉन्टल है और इसके एंगल में कितना 60 डिग्री और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 60 मीटर 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि at the same instant a second particle q is projected in the opposite direction with an initial velocity of 50 meter per second from a point level with O and 100 meter from O. Means यहाँ से जो पार्टिकल इधर फेंका गया ठीक इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक पार्टिकल फेंका जा रहा है, लेकिन कितना डिस्टेंस पे नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है 100 मीटर डिस्टेंस से और एक पार्टिकल को फेंका जा रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फेंका गया था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल बोला गया है क्या? राइट। तो मान लो ये एंगल थीटा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी बोला हुआ है। सो ये u1 ले लेते हैं, u2 कितना है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हिस्ट्री जी पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इफ द पार्टिकल कोलाइड, ऐसे एक दूसरे से की तरफ फेंका कि दोनों एक साथ कोलाइड भी हो गए, तब फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों कोलाइड कब करें? तब मैक्सिमम हाइट ही कोलाइड करने को क्या करना है? अरे एट 90 डिग्री कोलाइड करेंगे, वो कैसे पता चलेगा तो ऐसा 90 डिग्री कोलाइड करेगा? नहीं, एकदम बीच में कोलाइड करेगा, वो कैसे पता है? मुझे पता नहीं, दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है क्या? 180 नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। कैसे इस दोनों का एंगल 180 वाला से कहां से कैसे? देखो, हाँ बोलो। नहीं, रेंज सेम है, ऐसे तो वो जहां पर ग्राउंड में आके हिट करेगा एक दूसरे के साथ। सो तो लोग कोलाइड कर रहे हैं, वी कंसीडर इट टू बी हैपनिंग मिड एयर। ठीक है, एकदम रेंज नहीं जाके कोलाइड करेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगा। Say false and say this one goes like this. Yes, they collide somewhat over here. एक नहीं collide. चलिए एक पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट ही होते वहाँ पे, तब तो कोई माने नहीं, तो जेकरा मुझे कोलाइड करते करे एनीथिंग। ठीक है, बट मुझे एक चीज बताओ, अगर एक थोड़ा ज्यादा हाइट से जा रहा है, दूसरा लो हाइट से जा रहा है, तब कोलिशन होगा क्या? So what is the condition for them to collide? Right. At the time of collision, they should be at the same time. ठीक है, और एक चीज, the distance covered horizontally by the first projectile, and the distance covered by horizontally by the second projectile, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 100। ये दो कंडीशन हम लोग को अवेलेबल है। ठीक है, try this down. For the two projectiles to collide mid-air, for the two projectiles to collide mid-air, for the two projectiles to collide mid-air, their height should be same. Their height
should be same at that instant. Their height should be same at that instant. Right? अब मुझे बताओ at any instant हम लोग height कैसे निकालते हैं? At any instant height कैसे निकालते हैं? Basically height is a y-axis displacement. Height क्या है? Y-axis displacement. तो तुमको जब भी at any instant वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब तुमको t के टर्म्स में y को एक्सप्रेस करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या है? u y t plus half. So first वाला पार्टिकल के लिए height होगा, मान लो h1 लेते हैं, ठीक है? h1 will be u y क्या होता है? u sin थीटा होता है ना? तो u1 अच्छा यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं. u1 क्या है? 60 और sin थीटा कितना है? sin 30 डिग्री into t. t तो मुझे पता नहीं है, राइट? वी डोंट नो. और अच्छा तो अगर हम लोगों को थीटा भी पता नहीं है, e भी पता नहीं है, तब तो बहुत झमेला हो जाएगा, राइट? So they should be at the same height and else their sum is 1. ठीक है, जल्दी से बनाते हैं. And let's see what we can figure out. h1 equal to 60 sin theta t plus. अच्छा, is there any other way to find out height? You need to know the final velocity. लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है, वहाँ पर भी मुझे फाइनल वेलोसिटी पता लगाना है. और फाइनल वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट है. अच्छा ठीक है, चलो बनाते हैं जल्दी. h1 equal to 60 sin theta t plus half into minus g into t square. ठीक है? और h2 क्या होगा? सेकेंड वाला पार्टिकल के लिए इट्स होगा 50 sin theta, राइट? उसका थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मुझे पता नहीं. थीटा p प्लस हाफ इनटू, ये तो सेम ही होगा ना, राइट? सो देयरफॉर फॉर कोलिशन क्या होना चाहिए? h1 should be equal to h2. दोनों का हाइट सेम होना चाहिए, तभी दोनों कोलाइड करेंगे. तो अब h1 h2 का वैल्यू डाल दो. देखो इसमें कर रहा है क्या? साइड में कर जाएगा. sin 30 डिग्री कितना होता है? इसका वैल्यू बाद में डालते हैं. t प्लस माइनस हाफ डिग्री स्क्वायर हो जाएगा. हाँ, कैंसिल हो जाएगा. sin theta t minus half. So see, this cancels. तो 60 into sin 30 degree half है into t is equal to 50 sin theta into t. तो sin theta equal to क्या आएगा? 60 into right 50. ठीक है? So sin theta 3/5 है, तो थीटा कितना होना पड़ेगा? अब किसी को याद है मैंने कुछ बोला था शायद, ये sin inverse of 3/5 हम लोगों को पता है कितना डिग्री है. मैंने बोला था कि 37 और कौन सा 37 और 53, राइट? तब होता है जब हम लोगों के पास एक ट्राइंगल होता है जिसका साइड 3, 4 और 5 है. तो sin थीटा अगर 3/5 है, मतलब ये हम लोगों का थीटा है, राइट? sin थीटा इक्वल टू 3/5 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो अगर 3, 4 और 5 होता है तो 3 का ऑपोजिट वाला एंगल 37 होता है और ये कितना होता है? It's not exact, but very closely. So you can write nearly equal to 37. समझ में आया?
অ্যাঙ্গেলটা না আমাদের মনে রাখতে হবে বার করার জন্য। যদি কোনো একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল থাকে যার একটা সাইড হচ্ছে 3, একটা সাইড হচ্ছে 4 আর একটা সাইড হচ্ছে 5, তখন 3 এর অপোজিট যে অ্যাঙ্গেলটা থাকে সেটা সবসময় 37 হয়, আর 4 এর অপোজিট যে অ্যাঙ্গেলটা থাকে সেটা সবসময় 50 হয়। ঠিক আছে, এবার দেখা এখানে sin θ ইকুয়াল টু কি আসছে 3/5 আসছে, তো তাহলে sin θ যদি 3/5 হয় তাহলে 3/5 হচ্ছে sin θ, তাহলে তখন θ কোনটা হয় এটা, তাহলে θটা 37। বুঝা গেছে? इज क्लियर? बना लिया सब लोगों ने? जल्दी से बताओ। Well, now see, for the second part they want you to find out the time after which they collide. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ यूज करने जाएंगे तो मुझे हाइट भी पता करने का जरूरी है, लेकिन हाइट तो मुझे पता नहीं है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशंस यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। लेकिन देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच में मालूम है ना, तो अगर वो यहाँ कोलाइड कर रहे हैं तो ये वाला बॉडी जितना हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और ये वाला बॉडी जितना हॉरिजॉन्टली मूव करेगा दोनों का सम कितना आना चाहिए, राइट। तो हम लोग अब हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशंस में थोड़ा जाएंगे, ये वर्टिकल कैलकुलेशन कर रहे थे, अब थोड़ा हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करेंगे। हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में ये वाला बॉडी का वेलोसिटी कितना था, अरे यार 16 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था cos 60 डिग्री ना, तो along the horizontal direction, ठीक है, along the horizontal direction distance traveled by first particle is how much? कैसे निकालेंगे? distance is equal to velocity into time, क्योंकि horizontal direction में क्या मोशन है, what type of motion is it, right? तो यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हम लोगों के पास, displacement equal to velocity in time, s equal to vt, right? so यहाँ पर होगा x1 is equal to u1 cos theta 1 into t। तो मुझे बताओ u1 कितना है 60 cos theta 1 मतलब cos 30 डिग्री into t, t कितना है मुझे पता नहीं है, राइट। ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकंड पार्टिकल वो कितना होगा x2 equal to u2 cos theta 2 into t, मतलब u2 theta 2 दोनों ही मान लेना हमको, राइट। 50 into थीटा का साइन मुझे पता है, साइन थीटा कितना है, कितना निकला था, तो कोरेस्पोंडिंग cos थीटा कितना होना चाहिए, राइट, वी नो दिस, राइट। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोरेस्पोंडिंग cos थीटा 4/5 आना चाहिए, तो ये cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं 4/5, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो 40t, और यहाँ पर कितना आएगा sin 30 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2 into। अब हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि x1 plus x2 कितना है, तो t निकल जाएगा ना, देखो 60/2 है, कैंसिल करके 30√3 plus 43, so 10 कैंसिल कर सकते हैं, so it will be 10/3 plus, you can go for rationalizing and then simplifying the answer, ठीक है, rationalize करके इसको हम लोग थोड़ा simplify कर सकते हैं। हाँ t constant कहाँ, समझ नहीं आया, वो दोनों में t सेम है, अरे यार दोनों सेम इंस्टेंट में थ्रो किया गया था ना, और कोलाइड भी सेम इंस्टेंट में कर रहे हैं, तो दोनों का टाइम सेम नहीं होना चाहिए। अरे टाइम सेम नहीं होगा तो क्या होगा, एक रुक जाएगा दूसरा चल रहा है, कोलाइड कैसे होगा, समझ आया? दोनों अगर कोलाइड कर रहे हैं
और सेम इंस्टेंट पे थ्रो किया गया है, मतलब ये वाला जितना टाइम ले रहा है आने के लिए वो वाला भी उतना ही टाइम ले रहा है, तो दोनों के लिए टाइम सेम होना पड़ेगा। समझ में आता है? गुड आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने से ही अच्छे से समझ में आता है। वेल एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? 13 says a particle is projected from a point O with an initial velocity 3i plus 4 meter per second वाला है। So u is equal to 3i plus 4j meter per second is given. Find the vector expression for the velocity and position of the particle at time. Yes. कुछ फॉर्मूला पढ़ा है क्या हम लोगों ने इसका? ये बन गया आपका? वेक्टर एक्सप्रेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। यहाँ पर आई एंड जे के टर्म में दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को आई और जे के टर्म में निकालना है और पोजीशन भी आई और जे के लिए हम लोग निकाले थे ना। Right. So we had a formula, right? क्या formula था हम लोगों के पास? At any instant velocity का formula क्या था? U cos theta I cap plus U sin theta minus GT, right? और position का formula क्या था? U cos theta T I cap plus U sin theta T minus half GT square, right? So ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो यही वेक्टर एक्सप्रेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो हम लोग को U पता है ना तो हम लोग को थीटा पता है। Right, very good. What is U? U is under root of 3 square plus, you know why? Because U is the magnitude of the velocity. So magnitude अगर कोई वेक्टर ij के फॉर्म में रहता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? रूट ओवर ऑफ a square plus b square। हाँ, तो आंसर कितना आएगा? 5। और थीटा कैसे मिलेगा? हाँ, लेकिन सुनो, obviously tan phi पर, right? ठीक बोला सर, tan phi पर बात प्लस। So tan phi पर की पर बात करो, eta হচ্ছে আমার, what is this? This is ux, x axis component, and this is uy, right? So u tan theta will be what? uy by, right? uy টা u sin theta হয়, ux টা u cos theta, sin theta by cos theta tan theta। So uy হচ্ছে কত? 4 আর ux হচ্ছে 3, right? So tan theta equal to 4/3, তার মানে theta equal to tan inverse of, तो जब भी तुम लोग ये 4 3 नंबर्स दिख जाए ना, क्विकली 4 3 बना लेना। राइट, ये 4 है, ये 3 है, ये थीटा है हम लोगों का, तो ऑब्वियसली थीटा बड़ा वाला साइड का ऑपोजिट है, मतलब 50, राइट 53, राइट? नहीं, 4 3 है, 3 4 5 सिर्फ ये होने से, और कोई सिचुएशन नहीं, सिर्फ ये होने से 3 का ऑपोजिट वाला छोटा होता है और 4 का ऑपोजिट वाला बड़ा होता है। एक 37 एक 50, ठीक है? अच्छा, तो अब हो जाएगा, हम लोग को सारा वैल्यू मिल गया है, हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। अगर मैंने बोला होता कि तुमको इतना ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत ही नहीं था, और भी जल्दी कर सकते थे हम। ना, आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड जे एक्चुअली सम कैसे होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली हाउ यू शुड डू इट, ठीक है?
लेकिन देखो मुझे सिर्फ u और सिर्फ थीटा कहीं पर चाहिए क्या? मुझे या तो u cos थीटा चाहिए। अब मुझे बताओ u cos थीटा कौन सा है यहाँ पर? क्योंकि ux जो होता है वही तो u cos थीटा होता है ना, और uy क्या होता है? तो देखो हम लोग को u cos थीटा एक साइड नहीं चाहिए ना, u अलग से थीटा अलग से तो नहीं चाहिए था, देख के लगा वही चाहिए था, राइट? देख के हम लोगों को लगा कि वही चाहिए था, लेकिन हम लोगों को एक्चुअली में क्या चाहिए? u cos थीटा और u sin थीटा जो डायरेक्टली अवेलेबल है। तो देखो वैल्यू पुट कर दो आंसर। सर এটা আমরা কত করতাম যদি u এর ভ্যালুটা বসাতাম সেপারেটলি, তারপরে cos আবার তো সেটাই বলছি, সেটাই জেনারেল মেথড, সেই জন্যই আমরা u বার করেছি, থিটা বার করেছি, যাতে আমরা এই ভ্যালুটা আমরা পুট করি। তা তুমি একবার ওদেরকে ভেঙে u থিটা বার করবে, আবার u cos থিটা বার করবে, আবার u sin থিটা বার করবে, দিয়ে ডিসকভার করবে যে ও আমি তো ওই একই জায়গায় ফিরে এসেছি, তাহলে এতক্ষণ আমি করলাম কি? सो u cos थीटा क्या है? 3 है। u sin थीटा क्या है? 4 है। g कितना होता है? जनरली 10 है। और r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3t I cap plus 4t minus 5t square। समझा? इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं था, हम लोग डायरेक्टली वहां से फॉर्म वैल्यू लेके वहां पर डाल। तो ये सम से सीखा क्या हम लोगों ने कि जब भी एक इनिशियल वेलोसिटी i और j के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब i का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट u cos थीटा और j का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट u sin थीटा। समझा? अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक हम लोगों ने कोई सम में नोटिस नहीं किया, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। हम लोग को मालूम है कि एक्स एक्सिस वाला मोशन क्या टाइप ऑफ मोशन है, और वाई एक्सिस वाला मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग मोशन। एक्स एक्सिस वाला मोशन में अगर यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं करता है, सारा जगह में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज u cos थीटा। u cos थीटा सब जगह में u cos थीटा ही रहेगा, एवरी इंस्टेंट u cos थीटा। ठीक है? अब अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मैक्सिमम हाइट, क्या आंसर होगा? That is only the y-axis velocity is same. माने if you take a particle and throw it in the vertically upward direction, माने सोजा ऊपर, ताहले at the maximum height the velocity becomes zero. So for the projectile also, the y-axis component of velocity becomes zero at the maximum height. So only the x-axis component of velocity is remaining, and you know it does not change ever. So at the topmost point, the velocity will be zero. अगर हम लोग एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर छोड़ेंगे, थ्रो करेंगे, तभी मैक्सिमम हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं क्या? हम लोग तो एंगल में थ्रो कर रहे हैं ना, प्रोजेक्टाइल। तो जब एंगल में थ्रो करेंगे, तब जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता जाएगा। At the maximum height, the velocity will be, vertical component velocity will be 0, but total velocity is not 0. Total velocity 0 होता तो वो सीधा नीचे गिर जाता ना, तो वो सीधा तो नीचे नहीं गिर रहा है, वो सामने जा रहा है ना, मतलब क्या उसका horizontal component velocity है, so horizontal component velocity कितना है? u cos theta. So at the maximum height, the velocity will be only u cos theta. Okay, vertical component axis, see, along its axis, right? So if you want to draw a velocity versus position graph, मतलब मान लो बॉडी ऐसे प्रोजेक्टाइल जा रहा है ना, ये पॉइंट पे उसका x एक्सिस वेलोसिटी ये है, y एक्सिस वेलोसिटी ये पॉइंट पे उसका x एक्सिस वेलोसिटी ये है, y एक्सिस वेलोसिटी ये। देखो यहाँ पर लंबा था,
क्यों? क्योंकि जितना ऊपर चढ़ता जाएगा उसका y एक्सिस वेलोसिटी राइट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट उसका वेलोसिटी राइट, y एक्सिस का वेलोसिटी क्या हो गया है? 0 है guys. So y axis velocity are on drop velocity. When it comes to this point, right? Because it has now started falling. तो जैसे गिरने जाएगा तब क्या होगा? उसका y axis वाला velocity will be directing in the downward direction. लेकिन देखो x axis का velocity सब जगह में it does not change. So when it reaches over here, obviously ये वाला velocity थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. और ये सेम you understand? So you need to visualize the situation. Visualize करेंगे तभी हम लोग आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन का. You don't need to draw this diagram. This diagram is given in page 2. Open up page 2. देखो. Page 2 में देखो. 3 अलग-अलग सिचुएशन दिया हुआ है. एकदम टॉप में, एकदम लेफ्ट में इनिशियल प्रोजेक्शन. वहां पर देखो Vy का लेंथ बहुत लंबा है. थोड़ा ऊपर गए तो देखो Vy थोड़ा छोटा हो गया. एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट में गए Vy नहीं है, सिर्फ Vx है. और सब जगह में देखो Vx का लेंथ सेम है, एग्जैक्टली सेम है. क्लियर है? मतलब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जाएगा उसका y एक्सिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, but the x axis component of velocity will remain the same. Is that clear? That will be all for today.